अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अ, आज हम अपना लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 7 इन द वी के मेहता बुक जो है तो वो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें एक ही टॉपिक है जो अभी रिमेनिंग है, तो इसको कवर करके इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है तो ये एंड हो जाएगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से जो है तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है तो वो स्टार्ट करेंगे। एंड the date will be the last chapter of your course that is regarding the distribution of electric power. तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो today's lecture is regarding requirements requirements of satisfactory electric supply. ठीक। Uh, the topic is the requirements of satisfactory electric supply. That what points we need to keep in our mind to provide a satisfactory, that is a satisfaction to the consumer regarding the electric supply. So we have a number of points that we will discuss in this requirement of satisfactory electric supply. The first point is the voltage regulation. Voltage regulation. We already discussed that what is voltage regulation, लेकिन चले मैं दोबारा बता देता हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन देखें। वोल्टेज रेगुलेशन ये है कि आपके पास जो सप्लाई एंड पे जो वोल्टेज है और जो लोड साइड पे वोल्टेज है दे मस्ट बी द सेम। दिस इज नोन एज द वोल्टेज रेगुलेशन, या आप कह सकते हैं दिस इज a perfect voltage regulation. And if I give you example, for example, if we have a supply, if we talk about our domestic use, so for example, if we have a supply, an AC supply of 220 volts, अगर सिंगल फेज सप्लाई हमारे पास कोई भी घर के अंदर, और सपोज we say that a refrigerator is basically connected to this single phase supply. Let us call this load as a refrigerator. रेफ्रिजरेटर, ठीक। तो अगर ये हमारे पास कोई भी यानी सिंगल फेज सप्लाई हो और उसके एंड पे जो है तो वो रेफ्रिजरेटर द लोड कनेक्टेड हो, तो नाउ इफ वी सी दैट द रेफ्रिजरेटर हैज अ रेटेड वोल्टेज, इसका जो आपके पास जो रेटेड वोल्टेज है वो आपके पास होना चाहिए 220 वोल्ट्स, ठीक। तो जो सप्लाई वोल्टेज है एंड जो लोड वोल्टेज है, यानी अगर फर्स्ट करें मैं इसे लिखूं कि इफ द VS means the supply voltage and VL means the load voltage, if they are equal, so this means that you have a perfect voltage regulation. You have a perfect voltage regulation. Now let me call this voltage regulation as VR, ठीक। लेकिन आप देख सकते हैं कि this is the ideal case. Ideally, this can happen that the supply voltage is equal to the load voltage. आप कह सकते हैं कि the load voltage is equal to the supply voltage. नॉर्मली अगर आप देखें तो जो ये लाइन है इस सर्किट में, जो ये लाइन फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेटली दिस लाइन है some impedance in the form of you can say resistance, and in the form of inductance. If you call this resistance, or is in the form of inductance. So definitely you will have some drop across this line, sorry, across this line, across this phase. So now let us call, if this is the supply voltage Vs and this is the load voltage VL,
And for example, if V is the drop across this line or this phase, so now we can say that Vs, the supply voltage, will be equal to V, that is the drop across the phase, और plus VL, that is the drop across the load. तो अगर फर्ज करें हम वोल्टेज अक्रॉस द लोड अगर हम देखें तो VL will be equal to VS और माइनस V. ठीक, तो आप इसमें देख सकते हैं कि if the drop across the line, if V is quite greater, so then VL will be quite less as compared to the Vs. तो इन दिस केस अगर फर्ज करें आपके पास रेटेड वोल्टेज जो है तो वो 220 है, और VL इस केस में अगर सपोज आपके पास से आपके अगर 150 आ रहा है और रेटेड वोल्टेज जो है ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 220 and you have 150 at the refrigerator, so then the refrigerator efficiency will be reduced and it will not work properly. So the voltage regulation means कि आपके पास जो supply voltage है, that the load voltage it will be equal, it must be the same or near to the supply voltage, so that the load can work efficiently. ठीक, so this is the voltage regulation. So one of the requirement in electric supply is कि आपके पास जो voltage regulation है कि that must be quite satisfactory. आप कह सकते हैं that must be quite efficient. The voltage regulation, the voltage regulation must be quite efficient. ठीक, अच्छा इसके बाद सेकंड पॉइंट है regarding the satisfactory electric supply. Second point is dependability. Dependability. Now what is the dependability basically? If I term this या अगर हम मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो dependability means, या मैं लिख सकता हूँ कि it means reliability. It means reliability and continuous supply. ठीक, कि आपके पास जो सप्लाई हो वो कॉन्टिन्यूस हो और वो रिलायबल हो, ट्रस्ट वर्दी हो, यानी ये ना हो कि बार बार जो है तो वो फेल कर रही हो. यानी फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू एग्जांपल के व्हाट हैपेंस, what will happen if the power fails. आप कह सकते हैं कि पावर सप्लाई fails to hospitals. इस तरह if power supply जो है तो fails to airports, या इस तरह कह सकते हैं कि if power supply fails to defense organizations. ठीक, तो what will happen if power supply fails to hospitals? तो definitely आपके पास जो उधर patients हैं they will bear the burden. जो severe patients हैं या क्योंकि जो वेंटिलेटर्स वगैरह हैं या जो और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं दे रन ऑन द इलेक्ट्रिक पावर, तो डेफिनेटली दे विल फेल. अगर वो फेल कर जाते हैं तो आपके पास जो पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ जो है तो वो इन डेंजर हो जा सकती है. इसी तरह अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें कि पावर सप्लाई फेल्स टू एयरपोर्ट्स, तो डेफिनेटली द कम्युनिकेशन विल स्टॉप. थर्ड, अगर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास बंद हो जाते हैं, यानी अगर फर्स्ट करें आपके पास डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास पावर फेल कर जाती है, तो डेफिनेटली द रडार सिस्टम जो है तो वो फेल कर जाएगी. आपके पास जितनी उनकी कम्युनिकेशन है वो सारी फेल कर जाएगी, तो डेफिनेटली योर डिफेंस, द डिफेंस ऑफ योर कंट्री विल बी एट स्टेक. So this is basically the reason why we need that the electric supply must be reliable and continuous. Reliable means it must be rigid, it must be trustworthy, and continuous. If it is trustworthy and rigid and reliable, so definitely it will be continuous. तो दिस इज द डिपेंडेबिलिटी. इसी तरह एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि व्हाट विल हैपन इफ द पावर फेल्स टू इंडस्ट्री. अगर फर्ज करें पावर जो है तो फेल कर जाता है टू इंडस्ट्रीज, to any industry. For example, if we talk about a cement industry, so if the power fails, तो definitely जो kiln जो rotate कर रहा है वो जो है तो stop कर जाएगा. इसी तरह जो है तो जितने भी उधर मशीन्स हैं या जो पेकिंग मशीनरी है वो जो तो स्टॉप कर जाएगी. आपके पास जो कन्वेयर बेल्ट्स हैं उधर
बहुत सारे इंडक्शन मोटर्स लगे होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स को ड्राइव करने, ये सारी जगह स्टॉप कर देगी। तो इसमें एक तो अगर आपके पास आइडल मशीनरी हो गई, यानी इक्विपमेंट जो है तो वो स्टॉप करेगा। सेकेंडली आपके पास जो लेबर जो उधर पर्सनल वर्क कर रहे हैं वो जो है तो वो स्टॉप कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली ए लॉस टू द इंडस्ट्री, ठीक। तो देयरफॉर टू प्रिवेंट द इंडस्ट्री फ्रॉम bearing the loss, तो आपके पास जो सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है that must be continuous or dependable. So this was the second point. Now let us come towards the third point. The third point is balanced voltage. Balanced voltages. Now the another आप कह सकते हैं the third requirement of the electric supply is that it must provide a balanced voltage. Look, we talked about a balanced three-phase circuit. कि आपके पास कोई भी balanced three-phase circuit तब होता है if the supply are equal, if the supply voltages are equal in magnitude and 120 degree out of phase, और इसी तरह जो loads हैं तो वो सारे क्या हो, equal हो. Equal means equal in magnitude plus equal in phase. So this was the definition of a balanced three-phase system. आप कह सकते हैं कि balanced three-phase circuit. This is basically a neutral. तो इसको हम कह सकते हैं कि this is VAN, this is phase A, this is phase B, and this is phase C. VCN. Now the current, for example, if we take it flows in the phase A, अगर ये आपके पास IA है और चूंकि बैलेंस सर्किट है तो the impedances of the load connected आपके पास सारे क्या होंगे, equal होंगे. Z is in phase A, so Z will be in phase B, and similarly Z will be in phase C. Now this is the neutral. Let me correct it. This is N. Now the current that flows in phase B, let me call this is phase IB. और इसका जो current flow कर रहे हैं phase C, let me call this IC. ठीक, तो we define a balanced circuit as कि आपके पास जो VAN हो, its magnitude must be the same as VBN, or they must be equal to the VC and on the other hand they must be 120 degree apart. If VAN is at 0 degree, so VBN must be at minus 120 if this is a positive sequence, or VCN must be at plus 120. इसी तरह आपके पास जो लोड्स हैं तो दे मस्ट ऑल बी द सेम, यानी आप कह सकते हैं कि ZA must be equal to ZB. ZA is basically the impedance of phase A, ZB is the impedance of phase B, and ZC is the impedance of phase C, or they must be equal to Z, yani they must be equal. So this is basically, if these two conditions are met, so this is a balanced circuit. So we already discussed about the three-phase system कि आपके पास जो पावर सिस्टम है या जो ट्रांसमिशन होती है या जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ थ्री फेज. पूरा सिस्टम आपके पास जो है तो इन द फॉर्म ऑफ थ्री फेज होता है, क्योंकि इधर हम डिस्कस कर रहे हैं द इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ थ्री फेज. तो अभी बैलेंस्ड वोल्टेज देखें. बैलेंस्ड वोल्टेजेस आर रिक्वायर्ड. For example, if the load here connected, अगर हम कहें if the load here connected is an induction motor, is a three-phase induction
motor, अगर हम कहें कि for example the load which is connected is a three-phase induction induction motor. ठीक, now the three phase induction motor it is so designed कि ये आपके पास जो है ना बैलेंस्ड हो, बैलेंस इन अ सेंस कि इसके जो लोड या जो वाइंडिंग कनेक्टेड हैं तो उनके हर एक फेज का जो इम्पीडेंस है तो दे इट इज इक्वल। ठीक, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ दिस इज ए थ्री फेज लोड तो ये थ्री फेज लोड बेसिकली बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब ये कि इसके हर एक फेज का जो इम्पीडेंस है तो इट इज इक्वल। So if we connect this three-phase induction motor to a balanced voltage supply, so definitely then the circuit that will be made will be a balanced circuit. Okay? Or if we have a balanced circuit, so we know that in a balanced circuit the Vn is equal to 0 and therefore the In is also equal to 0. So if we have zero current in the neutral, so then there is no need of the neutral. तो इस केस में फिर आपके पास जो न्यूट्रल है उसकी कोई रिक्वायरमेंट जो है तो नहीं होती। तो इफ वी रिमूव दिस न्यूट्रल तो डेफिनेटली वी विल हैव लेस नंबर ऑफ वायर्स इन ए थ्री फेज बैलेंस सर्किट। अगर आपके पास नंबर ऑफ वायर्स जो है तो कम हो तो आपके पास यानी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, द मटेरियल दैट विल बी यूज्ड इन ए थ्री फेज बैलेंस सर्किट विल बी लेस। ठीक, तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। सेकेंडली ये कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डिजाइन बैलेंस, तो अगर आप इसको थ्री फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं तो इट विल वर्क प्रॉपरली। ठीक, वो किस तरह के, चूंकि इस इंडक्शन मोटर में यू हैव ए स्टेटर एंड यू हैव ए रोटर। वो स्टेटर में बेसिकली जो स्टेटर वाइंडिंग्स हैं तो स्टेटर वाइंडिंग्स जो है तो इट यानी वी गिव द सप्लाई टू दो स्टेटर वाइंडिंग्स, वो भी आपके पास यानी जो स्टेटर वाइंडिंग्स हैं उनको बेसिकली हम सप्लाई देते प्रोवाइड करते हैं। जब हम उनको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो व्हेन द फेज करंट फ्लोज इन दैट सप्लाई, यानी अगर फर्स्ट करें मैं इधर ड्रॉ करूं इसको ताकि आपको समझ आ जाए। यानी फॉर एग्जांपल इफ वी हैव a connection of an induction motor that is connected to a three-phase supply. Now let me call this a three-phase induction motor. Now let me call this induction motor as IM. ठीक, तो अगर आप इसको इंडक्शन मोटर, चूंकि दिस इज डिजाइंड एज अ बैलेंस थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो बैलेंस का मतलब ये कि इसकी जितनी भी फेज वाइंडिंग है यानी ऑफ द फेज ए, फेज बी एंड फेज सी, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपीडेंस इज सेम एज देयर फेज एंगल इज सेम। तो अगर इसको फर्ज करें, सपोज इफ वी प्रोवाइड एन अनबैलेंस सप्लाई, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी वर्किंग के बारे में बता दूं, अगर फर्स्ट में इसको आपके लिए डिटेल जो है तो खुद स्टडी करना चाहते हैं। तो इन ए इंडक्शन मोटर वी हैव ए स्टेटर, we have a stator windings, so now these are basically the stator windings. What happens in these windings is
कि इस वाइंडिंग्स के अंदर जब आपके पास यानी फेस करंट्स जो है तो वो फ्लो करते हैं, यानी आई ए, इसी तरह आपके पास आई बी, इसी तरह आपके पास आई सी. So now if we know in a balanced circuit if the voltage supplies are balanced, ठीक, इसी तरह अगर आपके पास फिर लोड जो है तो बैलेंस है तो डेफिनेटली द करंट्स आर बैलेंस्ड एज वेल. IA and IB they will be equal in magnitude, equal in magnitude and 120 degree out of phase. So for example if IA is at 0 तो IB आपके पास होगा at -120 और इस तरह IC will be 8 plus 120. So what happens is that when these currents basically flow in these phases, so they produce rotating magnetic field that is known as the RMF, known as the rotating magnetic field. Now this rotating magnetic field then rotates the rotor. It rotates the rotor and the induction motor works, or yeah, you can say that it basically does the work. So now if the supply voltages to this induction motor, if they are imbalanced, for example अगर ये आपके पास जो supply voltages हैं if they are unbalanced means कि if they are not equal magnitude, या आपके पास ये 120 डिग्री जो है तो आउट ऑफ फेज ना हो, बल्कि इसको मैं इस तरह कह रहा हूँ कि VN is not equal to VBN और इस तरह VBN is not equal to VCN. To be these voltages as unbalanced तो दो कंडीशन है. एक कंडीशन ये कि आपके पास अनइक्वल हो इन मैग्नीट्यूड फर्स्ट, और सेकेंड ये कि ये आपके पास 120 डिग्री आउट ऑफ फेज ना हो, यानी ये आपके पास जीरो पे ना हो. इस तरह जो है तो ये आपके पास यानी इसको मैं क्रॉस कर दूंगा कि इट मींस कि इट इज नॉट एट जीरो. इस तरह VBN जो है ना ये आपके पास 120 पे ना हो, और इसी तरह VCN जो है तो ये प्लस 120 पे ना हो. तो these are the two conditions के आपके पास सप्लाई वोल्टेज क्या होंगे, अनबैलेंस्ड होंगे. If these supply voltages are unbalanced and you have a balanced three-phase induction motor connected, तो डेफिनेटली आपके पास फिर जो फेज करंट्स होंगे तो वो भी आपके पास क्या होंगे, वो भी अनबैलेंस्ड होंगे. Now when the unbalanced current flows in these windings, यानी अगर फर्ज करें आपके पास कुछ यूं हो कि if IA is greater than IB और फिर आपके पास यानी IB is greater than IC, तो these are basically the unbalanced current. If these unbalanced currents जो है तो flow across this phase A, C and B of the induction motor, तो आपके पास फिर जो RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इट विल नॉट बी ए यूनिफॉर्म RMF, और यूनिफॉर्म RMF नहीं होगा तो आपके पास फिर जो रोटर होगा तो वो यूनिफॉर्मली जो है तो रोटेट नहीं होगा. एंड व्हेन इट विल नॉट रोटेट यूनिफॉर्मली तो डेफिनेटली जो मोटर आपके पास आउटपुट पावर डिलीवर करेगा तो दैट विल बी इनएफिशिएंट. एंड ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म प्रोडक्शन ऑफ RMF एंड रोटर रोटेशन तो आपके पास हीट जो है तो वो फिर प्रोड्यूस होगी इस इंडक्शन मोटर के अंदर, एंड इट विल डेफिनेटली एट द एंड इट विल बर्न, और ये आपके पास क्या होगा, अनडिजायरेबल है. तो दिस इज बेसिकली अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई के आपके पास जो वोल्टेज होंगे दे मस्ट बी बैलेंस्ड वोल्टेज. इसी तरह अगर हम अनदर रिक्वायरमेंट की तरफ आए ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई तो दैट इज द एफिशिएंसी. The fourth point is efficiency. ठीक कि another requirement of a satisfactory electric supply is the high efficiency. We know that the efficiency of any electric supply is equal to, आप कह सकते हैं कि output power
or divided by input power. This is, let's suppose we call this equation A. Now we know that the input power, अगर हम किसी भी supply system के अगर हम input power को, that we already studied, अगर हम इसको इसकी expression पे तो हम लिखें तो this input power is basically equal to the output power, is equal to the output power or plus the power losses in the सप्लाई सिस्टम, या आप कह सकते हैं पावर लॉसेज इन द ट्रांसमिशन लाइन, और इस तरह फिर पावर लॉसेज आपके पास इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लस पावर losses. So let us call this equation D. Now we know that the power losses, according to the expression of the power loss, we know that the power loss is equal to mod of I square into R. Now let us call this equation C. Now this I depends upon the power factor. This I depends upon the power factor. We already discussed that the power factor basically ranges from 0, power factor ranges from 0 to 1. If we have a high power factor, yani for example, if we have a power factor that is equal to 1, so then the current that will flow in the circuit will be low. So if the current flowing in the circuit is low, the signs means lesser. तो if this is low, तो then आपके पास जो I square R losses होंगे वो भी लो होंगे, और अगर आपके पास I square losses लो होंगे तो फिर आपके पास जो इनपुट पावर है तो that will be approximately equal to, then या फिर हम कह सकते हैं कि अब फिर आपके पास जो आउटपुट पावर होगा that will be approximately equal to the input power. And if input power and output power approximately equal, to then you will have a high efficiency of the supply system. Now if the power factor is low, yani agar aap keh sakein ki if the power factor is suppose if the power factor is low and if it is 0.3, तो इस केस में फिर आपके पास जो current that will flow in the circuit, it will be high. And if you will have a high current, then definitely you will have the high I square R losses. आपके पास high R square losses होंगे तो फिर आपके पास जो input power जो फिर output power है तो that will not be approximately equal to the input power. And if they are not approximately equal, so then you will have a lower efficiency. So this is why to improve, to have a high efficiency, we need a high power factor. If let me repeat the sentence. If we want a high efficiency of the supply system, so we need a high power factor of the load. अगर जितना आपके पास लोड का पावर फैक्टर ज़्यादा होगा तो इतना आपके पास जो लॉसेस कम होंगे तो इतना आपके पास सप्लाई सिस्टम की efficiency rate will be higher. Now let us discuss the fifth requirement. The fifth requirement is frequency. Frequency. We know कि जो आपके पास जो जितने भी आपके पास ये सिस्टम्स हैं उनकी जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है, frequency, it is basically from 50 to say 60 hertz. This is the rated frequency. अगर हम बात करें इधर पाकिस्तान की तो the rated frequency is from 50 to 60 hertz. तो अभी basically where the frequency comes from. So for example, if we have a supply, we have a generator and we have a load. So this supply is, for example, if this is V of t, or then we have a current I of t. Although we have a three-phase system, like just to make you understand, I have drawn a single-phase system. And for example, if this is a load, so now this supply has a frequency of 50 to 60 hertz. 50 to 60 hertz. And for this very frequency, this load is designed. For example, if this load is a refrigerator, or if we say this is an induction motor,
So this load is also designed for a frequency ranging from 50 to 60 hertz. Now, what if you have a frequency different from 50 to 60 hertz? If this frequency, if the frequency of the supply voltage is not equal to this 50 to 60 hertz, तो ये लोड चूंकि डिजाइन इस 50 to 60 hertz के लिए है, लेकिन चूंकि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं आ रही, तो definitely this load will be disturbed in a sense that this load can damage. So this since the load will damage, so this is not desirable. So therefore the frequency must be at the rated frequency that is from 50 to 60 hertz. इसी तरह another point है of the sinusoidal. Sixth point is sinusoidal wave. We know that the supply voltages, या आप कह सकते हैं कि जो alternating current की हम बात करते हैं, तो basically the alternating current is has a sinusoidal waveform. ठीक, अगर हम किसी भी वोल्टेज की अगर हम बात करें या फिर sinusoidal voltage, that is the desired voltage to be in any power system. So this sinusoidal voltage has only, this sinusoidal wave has only one harmonic. This has only one harmonic, and that harmonic is the fundamental harmonic. Let me call this. It has only one harmonic. It has only one harmonic. Harmonics are basically आप कह सकते हैं कि it has only one harmonic, and that harmonic is the fundamental frequency. Fundamental frequency और fundamental frequency represented by f naught. ठीक, अभी अगर ये वेव फॉर्म जो है तो आपके पास यानी अदर देन साइनोसाइडल हो, यानी फॉर एग्जांपल इफ दिस इज somehow like some disturbing sinusoidal, so then the harmonics in this waveform will increase. आपके पास फिर जो harmonics हैं that will get, now let me represent this harmonics with HAR, MONI CS. So these harmonics will increase. So if the number of harmonics will increase, तो definitely आपके पास फिर disturbance जो है तो वो create होगी inside the supply system. So that is not desirable. Therefore, the requirement of a satisfactory power supply is that it must have a sinusoidal waveform of the voltage and current as well. Now harmonics are basically the multiples of fundamental frequency. If we have the fundamental frequency 50, so then 100, 150 and 200 and all above them, the multiples, आप कह सकते हैं कि the multiples of the fundamental all will be including the harmonics. तो जितने आपके पास हार्मोनिक्स ज्यादा होंगे उतने आपके पास फिर सप्लाई सिस्टम में या सर्किट में जो है तो डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी. So therefore the waveform of the voltage supply, and therefore the current must be a sinusoidal wave only with a single harmonic. इसी तरह एक और requirement है, that is 7, and it is freedom from inductive interference. Now freedom from inductive interference, you normally would have noticed outside your homes. आपने अपने घरों के बाहर जो ये चीज नोटिस की हुई होगी कि जो पावर लाइंस हैं या जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की लाइंस हैं वो, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, और इसी तरह आपके पास जो टेलीफोनिक लाइंस हैं, यानी जिस तरह डीपीज हैं उनसे फिर वायर जो है तो आपके घरों तक आ रही होती है या उनको जो सप्लाई आती है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, तो वो बेसिकली पैरेलल नॉर्मली जो है तो वो मूव करते हैं. तो उन पैरेलल मूवमेंट की वजह से आपके पास जो पावर लाइंस हैं, तो इन पावर लाइंस में इन लाइंस की इंडक्टेंस की वजह से बेसिकली क्या चीज जनरेट होती है, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो इट प्रोड्यूसेस
an electromagnetic field around itself. So now if any telephonic line, अगर first करें मैं इसको mention कर दूं कि this is a telephonic line, if this is a telephonic line, let me call this TELE, then L means for the telephonic line, and if for example if this is any power line, so due to the flow of current in this power line and due to the presence of inductance of this power line, आपके पास magnetic field जो है तो produce होती है. So now this magnetic field, when this magnetic field will interfere with this telephonic line, so it will produces a noise, या आप कह सकते हैं hums जो है तो इस produce होंगे इस telephonic line में. तो आपके पास फिर जो communication होगी in this telephonic line, so there will be a noise in this telephonic line during the communication. So therefore, to avoid this noise and communication interference of the power line in the telephonic line, तो आपके पास arrangements जो है या care जो है तो must be taken कि आपके पास जो है तो कोई interference ना हो of the power line with the telephonic line, ताकि कोई noise उसमें create ना हो. So these were some of the points. और भी काफी सारे points हो सकते हैं, लेकिन these were the points that we discussed in your book. So this is the end of this chapter 7, and we only are left with a single chapter, that is the chapter 12 regarding the distribution system. So that we will study. उम्मीद है उसको हम जो cover कर लेंगे in 3 to 4 lectures, और या maybe in 2 to 3 lectures. तो इंशाल्लाह आपका कोर्स जो है तो end हो जाएगा. तो चलें आज के लिए इतना काफी है. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में याद रखें, और अस्सलाम वालेकुम.